Saram, to you as well. Let's just wait for a few more minutes for others to join, and then we will start our evaluation. Saira ma'am. मुझे याद है, थैंक यू। और जितनों की पीपीटी होती जा रही है वो लोग मुझे ईमेल कर देंगे मेरी ईमेल आईडी पे, जिससे आपको इनविटेशन आता है ना, आप अपनी पीपीटी मुझे उस पे ईमेल कर देंगे। जब पीपीटी ईमेल करोगे उसके बाद ही मैं तुम्हें फाइनल नंबर दूंगी। मैम मैंने प्रोजेक्ट बना लिया, प्रोजेक्ट वीडियो बना के ईमेल कर दूं? अभी उसके बारे में मैं कोई बात नहीं कर रही हूँ, अभी जो प्रेजेंटेशन चल रहे हैं मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। जिसके बारे में बात कर रही हूँ उस बात को ध्यान से सुनो। ओके मैम। रोल नंबर 1 तुम्हारे असेसमेंट से शुरू करते हैं आज। अखिल, प्रेजेंट करो बेटा। यस। बेटा मैं ना किसी को सिलेक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं आपके नंबर लॉटरी से निकाल रही हूँ। जिसका नाम आ रहा है वो प्रेजेंट कर रहा है। आप यहाँ पे मुझसे कितनी परमिशन ले ले, मैं नहीं दूंगी। मैं एक सिस्टम से चल रही हूँ, मेरे सिस्टम को बिगाड़ने की मैं तुम्हें बिल्कुल परमिशन नहीं दूंगी। जब तुम्हारा नाम आएगा तुम तभी प्रेजेंट कर सकते हो, ना उसके पहले ना उसके बाद में। द अर्थ इन सोलर सिस्टम। अखिल, कोई से एक डिवाइस का माइक म्यूट करो, पूरी आवाज एको हो रही है तुम्हारी। द अर्थ इन द चालू कर रखे हैं, उसमें से किसी एक की आवाज बंद करो। सारा मैम। अखिल, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है मुझे, और तुम्हारा प्रेजेंटेशन भी नहीं चल रहा है। सारा मैम। बिना परमिशन के माइक अनम्यूट करना किसी को भी अलाउड नहीं है। अगली बार जो भी करेगा मैं उसे क्लास से बाहर निकाल दूंगी, चाहे जो भी कारण हो। आपको बात करनी है, आप परमिशन लेंगे चैट बॉक्स में। द अखिल, मेरी बात सुनो। यस मैम मैम। अब आवाज ठीक आ रही है, कंटिन्यू करो।
मैम जैसे ही मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ वैसे ही इको होने लगती है मैम। बेटा क्योंकि तुम ना दो जगह से जो है प्रेजेंट कर रहे थे, इसकी वजह से। क्या तुम्हारा कंप्यूटर भी ऑन है? नो मैम तो मोबाइल से। मैम तुम मोबाइल क्या से। टीवी या कंप्यूटर किसी चीज के पास बैठे हुए हो? नो मैम। आवाज इको उसी वजह से होती है जब दो मैग्नेटिक डिवाइस एक साथ होते हैं। एक बार मीटिंग रीजॉइन करके फिर से कोशिश करो। मैम जब तक मैं करूँ बेटा शेयर। यहाँ पर ना तुम्हारा दो जगह नाम दिख रहा है मुझे, अखिल। एक बार मीटिंग रीजॉइन करो तुम। बेटा मेरी एक बात क्यों नहीं समझ रहे हो? जब मैंने एक बार कोई बात बोल दी है, मैं बार बार उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करूंगी। तुम्हारा रोल नंबर आएगा, तुम प्रेजेंट करोगे ना, उसके पहले ना उसके बाद, और अगली बार जो पूछेगा उसे मैं सीधे 0 दे दूंगी। मैंने किसी से नहीं पूछा कि कौन प्रेजेंट करना चाहता है। यस अखिल, एक बार और ट्राई करो। देखो तुम यहाँ पर मुझे दो डिवाइस से ज्वाइन दिख रहे हो इस समय भी। मैम मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला कि किसी को भी बीच में माइक अनम्यूट नहीं करना है। अब जो करेगा मैं उसे क्लास से बाहर निकाल दूंगी। तीसरी बार नहीं बोलूंगी मैं कोई बात। द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। अखिल डिवाइस को थोड़ा टिल्ट करो ताकि वो पूरा दिखे, उसका ओरिएंटेशन बदलो। पूरा नहीं दिख रहा है अभी वो। उसको टेढ़ा करो। डिवाइस को, तुम्हारे मोबाइल को टेढ़ा करो। रोटेट करो। मोबाइल को रोटेट करो। उसमें ऊपर उस सब जो मैग्नीफाइंग ग्लास के पास जो सिंबल है उसे क्लिक करो। प्रेजेंटेशन पे आओ तो वो पूरे स्क्रीन पे दिखेगा। राइट साइड में जो थर्ड नंबर पे सिंबल है उसे क्लिक करो, उससे प्रेजेंटेशन चालू होगा और पूरा बड़ा दिखेगा। गुड, अब आगे बढ़ो, प्रेजेंट करो। द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। Mercury is the smallest and innermost planet in the solar system. Its orbit around the sun takes 87.97 Earth days, the shortest of all the planets in the solar system. Venus. Venus is the second planet from the sun. It is named after the Roman
goddess of love and beauty, as the second brightest normal object in the night sky after the moon. Venus can cast shadow and can be on ray oceans visible to the naked eyes in broad daily light. Earth. Earth is the third planet from the sun and the only atmosphere objects known to harbor life. About 29% of Earth's surface is land, consisting of countries and is land. The remaining 71% is covered with water, mostly by oceans, but also lakes, rivers, and other fresh water, which together constitute the hydrosphere. Mars is the fourth planet from the Sun and the second smallest planet in the solar system, being larger than only Mercury. In English, Mars carries the name of the Roman god of war and is often referred to as the red planet. Jupiter is the fifth planet from the Sun and the largest in the solar system. It is a gas giant with a mass 1,000 that of the Sun, but 2.5 times that of all the other planets in the solar system. Climate. Saturn Saturn is the fifth planet from the Sun and the second largest in the solar system after Jupiter. It is a gas giant with an average radius of about many time that of Earth. It only has one eighth the average density of Earth. However, with its longer volume, Saturn is over 95 times more mass. Uranus is the seventh planet from the Sun. Its name is a reference to the Greek
god of the sky, Uranus, how affording to agree. Mythology was the grandfather of Zeus, Jupiter, and father of Cronus, Saturn. It's have the largest planet radius and fourth larger planet mass in the solar system. Neptune is the eighth planet left, no solar planet from the sun in the solar system. It is the fourth largest planet by diameter, the third most mass planet, and the then fifth grand planet. It is 17 times is mass of Earth. Satellite more mass than its near times Uranus. Pluto is a dwarf planet in the Kuiper belt, a ring of bodies beyond the orbit of Neptune. It was the first and the largest Kuiper belt object to be discovered after Pluto was discovered in 1930. It was da- declared to be the ninth planet from the sun. मैम हो गया. ठीक है, फिर प्रेजेंटेशन अपना स्टॉप करो. टाइम फॉर योर ओरल टेस्ट. अपना कैमरा ऑन करो. यस, ठीक है. Which planet appears the brightest from Earth's sky? सबसे ज्यादा ब्राइट कौन सा प्लैनेट दिखाई देता है अर्थ के स्काई से? मैम रिपीट. मैंने कहा कि which planet looks the brightest from the Earth sky? पहले तो माइक अनम्यूट करो और अनम्यूट करके रखो जब तक मैं सवाल पूछ रही हूँ. यस. जो नहीं आते हैं बताते जाओ, नहीं आते हैं तो मैं आगे बढ़ती जाऊंगी. नो मैम. ओके. Which planet has rings around it? मैम सैटर्न. Which planet will help you find the north direction? Sorry, which star will help you find the north direction? नो. Which planet is made completely of gas?
Name any one of them. And you, Neptune, Neptune, ठीक है. And where is the asteroid belt between which planets? Jupiter and Mars. ठीक है. Which is also called as the red planet. And Mars. Okay, ठीक है. Good. Okay, next will be rule number 17, Jayavardhan. Ma'am, absent. Absent. एंड यस आई विल रिपीट. बेटा मुझे नहीं पता मेरे व्हाट्सएप पे क्या मैसेज आ रहा है. मैं व्हाट्सएप की प्रेजेंटेशन सेव नहीं कर सकती. अगर आपको आपका प्रेजेंटेशन सेव करवाना है, आपको नंबर लेने हैं, आपको ईमेल करना पड़ेगा. रूल नंबर 4 एंजल. मैम स्टार्ट करूँ प्रेजेंट? यस बेटा करो स्टार्ट. वैशाली तुम्हारा माइक क्यों अनम्यूट है? क्या आप क्लास से बाहर जाना चाहती हैं? मैम मेरा माइक म्यूट है. अभी मुझे अनम्यूट दिखा, तभी तो मैंने बोला. मैम मेरा बहुत देर से म्यूट है. Major domains of the Earth. Lithosphere. First, it comprises the rock of the earth crust and then layer of soil. Second, there are two main divisions of the earth's surface. Third, the large landmass are known as the continents. Fourth, the huge water bodies are called the ocean fish. Continents. First, there are 7 major continents. Second, the greater part of the landmass lies in the northern hemisphere. Third, Asia is the largest continent. Fourth, the combined landmass of Europe and Asia is called Eurasia. Europe plus Asia. Hydrosphere. First, ocean. 96.5% of water is salt water and it formed in the ocean. Second, freshwater. The remaining 3% is freshwater. Third, freshwater distribution. Ice 1.762%. Ground 1.7%. Surface freshwater 0.014%. Atmosphere and soil 0.002%. Oceans. First, the Arctic Ocean is located with the Arctic Circle and surrounds. The Pacific Ocean is the largest ocean. Third, the Southern Ocean and the Arctic Ocean in the order of their size. Fourth, the Antarctic Ocean is the second largest ocean in the world. Atmosphere. First, the atmosphere protects us from the harmful effects from the sun rays. Second, the gaseous layers that surround the earth is the atmosphere. Third, the atmosphere is composed mainly of nitrogen and oxygen. Biosphere, the domains of life. First, the biosphere is the narrow zone of life, contact between the land, water, and air. The organisms in the biosphere may broadly be divided into the plant kingdom and the animals kingdom. Third, carbon dioxide is
an important constituent of air, but increase in the amount of CO2 leads to increase in global temperature. Fourth, all the living organisms, including humans, are linked to each other and to the biosphere for survival. I'm done. Okay, Angel, open up your camera. Time for your oral test. Yes, which one is the smallest continent on Earth? Europe, Okay, which is the ocean which is the ocean near Antarctica? नहीं पता. Okay, which continent India belongs to? Ma'am, what? इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में है? Asia, ठीक है. And how much percentage of fresh water is available in the world? ma'am नहीं पता. Okay, ocean water is fresh water, true or false? True. In which sphere does the life exist? Ma'am, what? In which sphere life happens or life exists? Ma'am नहीं पता. बेटा तुमने यही सब तो अपने प्रेजेंटेशन में बताया है और तुम वही आंसर नहीं मुझे दे रही हो. प्रेजेंटेशन किन चीजों पे था? इन्हीं सब पे तो था. तुमने अपने खुद के स्लाइड नहीं पढ़े क्या? अभी जो पूरा प्रेजेंटेशन हुआ वो इन्हीं सब चीजों का तो था. जब तुमने अपना ही प्रेजेंटेशन नहीं पढ़ा तो फिर तुम ओरल टेस्ट के लिए क्या तैयारी करके आई हो? आई डोंट हैव एनी वे टू गिव यू गुड मार्क्स. तुमने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है. ओके, आई मूव ऑन टू नेक्स्ट. ट्वेंटी 8 संस्कृति. Yes, ma'am. प्रेजेंट करो बेटा. Yes, ma'am. Ma'am, is my screen visible? Yes. हाँ बेटा, your screen is visible. Just start your slideshow and present it.
Major Domains of the Earth by Sanskriti Dhakre. The surface of the Earth is a complex zone in which three main components of the environment meet, overlap, and interact. The zones having these components are the lithosphere, atmosphere, hydrosphere, and the zone where these components interact is biosphere. Now, 1 second. Lithosphere. The solid portion of the Earth on which we live is called the lithosphere. There are two main divisions of the Earth's surface: continents, ocean basins. The large land masses are known as continents, and the huge water bodies are called ocean basins. The highest mountain peak, Mount Everest, is 8,848 meters above the sea level, and the greatest depth of 11,022 meters is recorded at Mariana Trench in the Pacific Ocean. Continents. There are seven major continents: Asia, Europe, Africa, Australia, Antarctica, North America, South America. Hydrosphere. Water covers a big area of Earth's surface, and this area is called the hydrosphere. It comprises water in all its forms, that is, ice, water, and water vapor. The Earth is blue planet. More than 71% of the Earth is covered with water and 29% with land. More than 97% of the Earth's water is found in the oceans and is too salty for human use. A large proportion of the rest of the water is in the form of ice sheets and glaciers or under the ground, and very small percentage is available as fresh water and is suitable for human use. Oceans. The oceans are the major part of hydrosphere. They are all interconnected. The three chief movements of the ocean water are the waves, the tides, and the currents. The five major oceans are Pacific Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean, Atlantic Ocean, and Southern Ocean. Atmosphere. The gaseous layers that surround the Earth is the atmosphere, where oxygen, nitrogen, and carbon dioxide and other gases are found. The atmosphere extends up to a height of about 1,600 kilometers. The atmosphere is divided into 5 layers based on composition, temperature, and other properties. The layers are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermospheres, and exosphere. The atmosphere is composed mainly of nitrogen and oxygen, which make about 99% of clean dry air. Nitrogen is 78% in the atmosphere, oxygen is 21%, and the other gases are 1%. The density of oxygen varies from height. It is maximum at sea level and decreases as we go up. The temperature also decreases as we go up. The atmosphere exerts pressure that varies from place to place. Air moves from high to low pressure. Moving air is known as wind. Biosphere. The biosphere is the narrow zone where we find land, water, and air together, which contains all forms of life. It is the zone that life that is unique to this planet exists. All the living organisms, including humans, are linked to each other and to the biosphere for survival. The organisms in the biosphere may broadly be divided into animal kingdom and plant kingdom. The three domains of the earth interact with each other and affect each other in some way or another. Global warming. Emission from industries, thermal power plants, and vehicles pollute the air. Carbon dioxide is important for the constituent of air, but increase in amount of carbon dioxide leads to increase in global temperature. This is termed as global warming. There is a need to limit the use of resources of the earth to maintain balance of nature between the domains of lithosphere, the atmosphere, and the hydrosphere. Thank you. Okay, just to open your camera, time for your test.
Which is the layer of atmosphere closest to Earth? Troposphere. And which is the layer of atmosphere the most away from Earth? Exosphere. And just name any 3 continents. Africa, Antarctica, Asia. Okay. And, name the ocean between Europe and America. Atlantic Ocean. Very good, बहुत बढ़िया. चलो, so that will be all for today, and I hope all of you have safe and happy Diwali. All of you have fun. हम लोग इसे continue करेंगे जब हम लोगों के vacations over हो जाएंगे. Take care. All the very best for Diwali, and that will be all for today. Thank you and sign off. Thank you, Happy Diwali, ma'am. Bye. Bye, Ram. सभी को साई राम. Happy Diwali. Have fun. Happy Diwali, ma'am. Happy Diwali, Happy beta. Diwali, ma'am. Happy Diwali, beta. Happy Have Diwali, fun. ma'am. Happy Diwali, beta. Happy Diwali. Happy Diwali, beta.